All right, so Bismillahirrahmanirrahim. As I mentioned, today we will be doing May June 23 paper 1 variant 2. It is going to be a very good paper as far as the revision of paper 1 is concerned. So I want everyone to open this paper in your devices, or you can print this as well. Or if you do not have any printer, you can simply open it in your iPad. Just a second, let me join from the other device. So it's the same paper which Hassan sent a few minutes ago. Okay. So screen is visible and I'm perfectly audible, right? Yes. Yes, sir. Okay, so you should have this calculator with you. ये paper आप लोग solve करेंगे. I will there be just to assist you people, and we are going to solve, inshallah. Try to solve the entire thing part of this paper. Let's get started. Question number 1. When chlorine gas is analyzed in the mass spectrometer, chlorine 35 cation are detected. Which row is correct? So now we need to know for number of neutrons in first attempt, and then we need to know the electronic configuration. So how many neutrons? We know chlorine is 17, the atomic number is 17, and mass number is 35. So how would you know the neutron? 35 minus 17, it would give you 18. So it could either be A or B. And with positive charge, it has 16 electrons. Since the atomic number is 17, if you put positive charge, it has 16 electron. And I believe this is the configuration for 16 electron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p4. This represents 16 electron, right? This goes 18 electron, which is obviously not correct. So which species, question number 2, is a free radical? Free radical is a species that have odd number of electron in the valence shell, odd number of unpaired electron. Now, which species is a free radical, right? तो इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास 1s2, इट इज नॉट अ फ्री रेडिकल. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p1. सो इट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और टोटल ये ऑड नंबर है, तो आई बिलीव B should be the right answer. Let's look at the other options. We know oxide ion is a stable ion. इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, सिंस इसका एटॉमिक नंबर 8 है. सो विद 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, सो इट इज अ स्टेबल आयन. जिंक आपको पता है एटम कैन नेवर बी अ फ्री रेडिकल, राइट? सो इट हैज टू बी B. A free radical is a species that have odd number of electron in the valence shell. तो odd number of unpaired electron भी उसको कह सकते हैं. So for second, B should be the correct option. Which statement is correct? Starting with option number D. The 8th ionization energy of chlorine is more than that first ionization energy of neon. We know that chlorine have atomic number 17. So 8th ionization energy is when you will be removing 8th electron. So imagine you have already removed 7 electron. So since chlorine is present in group 7, so it has 7 electron in the valence shell. The 8th electron that you could remove from chlorine would be from inner shell. And to remove that 8th electron, huge amount of energy would be required. Am I right? Yes. Because chlorine have 7 electron in the valence shell, so that 8th ionization energy would be very large, as it has 17 protons in the nucleus, and also the 8th electron you are removing from the inner shell because 7th array nikal chuke hain. Let's look at neon. The atomic number of neon is 10. So when you remove the electron from neon gaseous, I think this is a correct statement. It says the 8th ionization energy of chlorine is more. क्लोरीन की ऑफ कोर्स ज्यादा होगी क्योंकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, इट हैज अ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन. तो बिल्कुल बात ठीक है, नियॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू 8th ऑफ क्लोरीन. लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस.
the second ionization energy of sulfur is equal to the first ionization energy of phosphorus. So sulfur is 16 atomic number है बेटा इसका. So second ionization energy होगी when you've already removed one electron. So you remove another electron, 16 atomic number अभी भी है. अच्छा, ये कह रहा है कि the second of is equal to the first ionization energy of phosphorus. मुझे बताएं कि do you think these ionization energy would be equal, और किसकी अगर नहीं है तो किसकी कमियां ज्यादा होगी? Anyone in the class? The second of sulfur is equal the first of phosphorus. Is this even true? It is not true, because sulfur has a greater nuclear charge. So sulfur की जो second होगी that would be way much greater than the first of phosphorus, क्योंकि phosphorus के nucleus में कितने protons हैं? 15. They both have same amount of shielding effect, same number of protons, I mean same number of electrons. किसकी बात कर रहा हूं मैं? Sulfur plus 1 की और phosphorus simple की. Sulfur plus 1 के पास भी 15 electrons हैं और phosphorus simple के पास भी 15 electrons हैं. Although they both have same amount of electron, but since sulfur has a greater nuclear charge, this is an incorrect option. The second ionization energy of calcium is more than that of second ionization energy of magnesium. Look, calcium, the second ionization energy of calcium is more. Calcium has an atomic number of 20. Calcium का atomic number क्या है? 20. And calcium is present in fourth period of the periodic table. So that means it is more away from the nucleus compared to magnesium, जिसका atomic number 12 है. यहाँ पे आप ये लॉजिक यूज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो इसका atomic number 20 है, इसका 12 है, तो calcium की ionization energy should be greater. So why do you think the calcium की ionization energy is not greater than the other one? I mean, this is an incorrect statement. Calcium do not have statement हमने ठीक वाली ढूंढ ली हुई है. Second ionization energy of calcium is less than that. The reason is calcium is in fourth period, so calcium has more number of valence shells. तो calcium के जो 2 electrons होंगे वो बहुत दूर होंगे nucleus से, as compared to magnesium which have only 3 occupied shells. So calcium के 4 है. So magnesium has a greater net nuclear attraction. That's why this is also incorrect. The first ionization energy of chlorine is more than the first ionization energy of argon. We know that argon is a stable, it's a noble gas which have required a lot of energy. So argon has more, not the chlorine. Okay, number 4, I want everyone to read the statement for number 4 is, if 1 mole of hexane is with 6 carbon, right? So hexane is C6H14, 2n plus 2. Combust in excess of oxygen, how many moles of the product are formed? So imagine you have C6H14, you are burning 1 mole. So how many moles of the product would you get? You will definitely get 6 moles of carbon dyes and you will get 7 moles of water. I mean, let's balance the equation. उसने सिर्फ products ही पूछे हैं ना, तो oxygen balance नहीं भी करेंगे तो बात ठीक है. Products हमारे पास 13 ही बनेंगे. Oxygen balance कर भी लें, product को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर देते हैं. 12 oxygens ये हैं, 12 and 7. 12 and 7 is 19. तो इसको 19 over 2 कर लेते हैं. 2 cancel and oxygen at balance. So the right option should be 13 products, 6 carbon dioxide and 7 water molecules. Separate sample of each mass 1 gram of these compounds listed are treated with excess of dilute acid. So you are treating each calcium carbonate, lithium carbonate, magnesium carbonates with sulfuric acid, and the mass of each sample is 1 gram. Which compound produces the greatest amount of carbon dioxide? Let's start with D. Sodium carbonate, when reacts with any acid, let's imagine it is HCl, you will get NaCl, you will get CO2, and you will get water. उसने कोई acid का बताया तो नहीं है ना. So we put 2 over here, and the ratio between carbon dioxide, I think it's a balanced equation now. We need to put 2 over here. It's a balanced equation. That means 1 mole of sodium carbonate produces 1 mole of CO2, right? So let's find the moles of sodium carbonate in 1 gram. You are given with the mass of sodium carbonate 1 gram. The MR of sodium carbonate is how much? I believe it's 96. Let's try. 2 times 23 plus 12 plus 3 times 16. कितना आएगा ये? 106. तो आप सैंपल के मोल्स निकालोगे, रेशियो लगा के कार्बन डाई के मोल्स निकालोगे,
और आपने अच्छा, इसमें सिर्फ आपने, क्योंकि ये हर किसी का, इसमें हमें हर किसी का आंसर चाहिए, बिकॉज वी नीड टू नो विच प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स देख लेते हैं, हर किसी में हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा मोल्स बन रहे होंगे दैट वुड बी आवर आंसर। तो यहाँ पे 1/106, let's find the moles of sodium carbonate first. 1/106 is how much? It's 9.43 times 10⁻⁻3. Ratio is 1:1, तो यही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी हैं. So these are the moles produced carbon dioxide when 1 gram of sodium carbonate is combusted. Okay. अच्छा, इसको इससे भी कम टाइम में हम कर सकते हैं. आपने सिंपली सबका एमआर कैलकुलेट करना है. जिसका एमआर सबसे कम आएगा उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा और उसके मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे. रेशियो सब में 1:1 ही है, राइट. सो हम करके देख लेते हैं. मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 treated with HCl to produce magnesium chloride to produce CO2 and H2O. ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 2 लिख दिया, ये बैलेंस हो गई ना बैलेंस. मैग्नीशियम क्लोराइड, यस. अब आप देखो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका मैथ्स ये है, इसका एमआर क्या होता है. मैग्नीशियम इज 24.1 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 3 times 16 वुड बी 48. इसका एमआर आया है 84.1. अब मुझे बताओ, अगर हम कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो किसका आंसर बड़ा आएगा, 1/84.1 और 1/106. ऑफ कोर्स 1/84.1 का आंसर बड़ा आएगा. इससे मैं करके देख लेते हैं हम लोग. सो 1/84.1 gives me 0.011. ठीक है, these are definitely the bigger moles than option number D. इसी तरह आपने B के भी कर सकते हैं फाइंड. हम डायरेक्ट इसका एमआर कैलकुलेट कर लेते हैं. लिथियम होता है 7, तो 2 times 7 प्लस 12 प्लस 48. इसका एमआर आया 74, इसका एमआर आया था 84.1, इसका एमआर है 106. तो जितना जिसका छोटा एमआर होगा उतने ही वो ज्यादा मोल्स प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इट इज 1/mr. तो जितना एमआर छोटा होगा मोल्स ऊपर उतने ही बड़े आएंगे. सो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज 40 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 48. इट इज एग्जैक्ट 100. इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर. आप करके भी इसको देख रहे हो, को मार्किंग स्कीम से हमें चेक कर दे कि 1/74 होगा. जो मोल्स आएंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे, तो सबसे ज्यादा मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें बनेंगे. दैट्स व्हाई डी शुड बी द करेक्ट आंसर. मेक सेंस एवरीवन? यस. बजाय इसके कि हम सारा सॉल्व करें, रेशियो लगाएं एंड एवरीथिंग, जस्ट गेट द एमआर. जिसका एमआर सबसे छोटा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इट्स मल्टीपल चॉइस पेपर. तो हमें कोई एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं है, बस लार्जेस्ट उसने कहा है. ऑलराइट, नंबर 6. Which statement about Cl and double bond O molecule is correct? So if you look at nitrogen, it is bonded to 3 bonds. It must have a lone pair because nitrogen have 5 electrons in the valence shell. Each molecule contain 1 sigma and 2 pi bond. Do you think इसके पास 2 pi bonds हैं? This molecule have 2 pi bonds. It has only 1 pi bond. In fact, 2 sigma. So this is an incorrect statement. It is a non-polar molecule. Do you think it's a non-polar molecule? It is a polar molecule. Because we have oxygen, we have nitrogen. ये तो सारे highly electronegative element है. ठीक है, तो whenever there is a electronegativity, slight difference भी होगा तो वो polar होगा. It is not a non-polar. Is it a linear molecule? देखो दिखने में उसने linear ही बनाया है. But as we know that nitrogen have a lone pair here, lone pair will repel the bond pair and it will be a bent shape. Nitrogen atom is sp2 hybridized. So how do we get the type of hybridization? Number of sigma bonds plus lone pair around the central atom. How many sigma bonds are there? 1 sigma bond, second sigma bond. How many lone pairs? So the answer is 3. Whenever the answer is 3, the hybridization is always sp2. Whenever the formula, इस formula में answer is 4, the hybridization is sp3. Whenever answer is 2, the hybridization is always sp. Make sense, everyone? So this D is correct. Yes. So whenever you need to get the hybridization in any molecule, you need to focus on the central atom, right? And for central atom, you will find the number of sigma bonds around the central atom
In this example, we have 2 sigma bonds, and then the lone pair around the central atom, on the central atom. How many lone pair do we have? 1. So the formula is number of sigma bonds plus lone pair. When you add sigma bond and lone pair here in this example, the answer would be 3. 3 mean sp2. 3 का मतलब है एक s और 2p, sp2 तीन ही बन रहे हैं अगर गौर से देखो तो sp2. If अगर इसी फॉर्मूला में आप वैल्यूज डालो और आंसर 3 की बजाय 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. अगर वो आंसर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp. Make sense everyone? Yes. Okay. Which row is correct? We have molecule here, the shape, and the total number of pairs of electron in the valence shell of a central atom. So it's just pair of electrons. Starting with A. Carbon dioxide, we know carbon dioxide. How many sigma bond around the carbon? 2 sigma bond, 0 lone pair. So 2 answer आएगा. 2 is always linear and sp 180 होगा इसका bond angle. Correct, correct. So total number of pairs of electron. तो यहाँ पे मुझे बताएं in a valence shell of a central atom के valence shell में कितने pairs of electrons? How would you know? These bonds are actually pair of electrons. So we have 4 bonds. We have 4 pair of electron, not 2. So option A is not correct. 4 bonds का मतलब 4 pairs. BF3 boron is in group 2 of the periodic table. Is in group 3 of the periodic table. Have 3 electron, all 3 involved in bonding. It is trigonal planar with 120. Trigonal planar and 3 paired electron. Yes, that is correct. It has 3 paired electron. So B is correct. Ammonia. It's tetrahedral. Ammonia is not tetrahedral. Ammonia is pyramidal. Because ammonia has a lone pair, nitrogen have lone pair. This is the structure of ammonia. It has pyramidal. PF5. This is octahedral, but this is not even octahedral. इसके में 6 बताया हुआ है, इसके 5 हैं, तो ये तो दोनों entries इसकी incorrect है. Make sense everyone? This was easy. Okay, let's discuss number 8, which I believe from states of matter. The volume of vessel is 1.2 times 10⁻³ meter cube, right? It contains pure argon at a pressure of 1 into 10⁵ Pascal and a temperature of 25 degrees. Under these conditions, it is assumed that argon behaves like an ideal gas. Which mass of argon does it contain? So if it behaves like an ideal gas, we can use this equation PV/nRT. If we are looking for mass, we have to substitute this N with m/mr and RT. So since it says argon, तो हम यहाँ पे किसका mr लगाएंगे? आर्गन का, और mass हम कैलकुलेट कर लेंगे. So let's rearrange the formula. PV mr उधर चला जाएगा over RT equal to m. ये formula सबको समझ आया? How did we rearrange the formula? So n था, n को बेटे हमने replace कर दिया m/mr से. Since m को हमने subject बनाना है, तो ये उधर जाके multiply हो गया और ये divide हो गया. Now we have everything given. We are given with the pressure. How much pressure? Pressure is, यहाँ पे मैं ऊपर solve कर रहा हूँ इसको, right? Pressure is 1 into 10⁵, already in standard units. Volume is already in the meter cube, 1.2 times 10⁻³ What is the mr of, what do we call, argon? Argon का mr क्या है? 40? Argon? Sir, 39.9. Okay, so 39.9 लिख लेते हैं. A levels के periodic table से देखा ना, assume आपने वहीं से देखा. जी sir. Okay, R is 8.31 and temperature is in degrees Celsius. So how, if you add 273 plus 25, it would be how much? 25 plus 273. It's 298. Please do the maths, everyone. We are using the standard units. What should be the answer? That is the values that we are going to use. Sir, 1.93. 1.93. It's exact option number B. If someone can just हमें बता दे कि if this is the answer. Question number 8. जी sir.
Yes. Okay. So it was easy. Just you need to rearrange the formula, use the standard units. Everything was in standard except the temperature. You use temperature as 273 to make it Kelvin, and you get P, which is 1.93 grams. A student mixed 25 cm cube. So this is again from ये होने वाला है enthalpy change कर neutralization का होगा. A student mixed 25 cm cube of 4 mole per decimeter cube of HCl with equal volume and this much concentration of sodium hydroxide. The initial temperature of both was 15, the maximum temperature was 30, and that means the delta T is 15 degrees. Heat capacity of the final solution is 4.18. Density of the solution is assumed to be 1 gram. What is the enthalpy change of neutralization? Now, how do we get the enthalpy? You know, Q is MC delta T, right? This is how you'll get Q. And for enthalpy change, you can divide the Q with the number of moles of limiting reactant, right? यहाँ पे दोनों के same moles हैं. So let's first use the MC delta T, right? So where is M in this question? Now M is the total volume of solution in CMQ. Volume of solution, right? We have 25 of this and we have equal volume of the other. That means we have 50 cm cube of the solutions, right? C is 4.18. And what is delta? Initial temperature was 15, final is 30. Delta T is 50. Can we find Q here? Um, 3135. 135. I assume सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं because you have to do it after a few days. So you're only left for 2-3 days. So I assume कि आप सब लोग मेरे साथ इसको solve कर रहे हैं. Because सुनना भी जरूरी है, लेकिन जब continuously आप सुनते हैं तो वो थोड़ा सा boring भी हो जाता है. So I want you to solve with me the same thing. All right? And I assume, including Dr. Marwa and her friend and everyone is attempting. Yes, Ravaha and Mr. Saad. Excellent. Dr. Zainab is here. Chavez. No one from Frobels. All right. So, Q हमने find कर लिया. अब next task is to divide it with the moles. लेकिन mole limiting reactant के, लेकिन यहाँ पे मजे की चीज ये है कि both have the same reactant. We are treating HCl with NaOH. तो 1:1 ही होगी ना, you'll get NaCl and water. देखो रेशियो आपने कैसे पता चलनी, इसके जितने H हैं उसके उतने ही OH हैं. तो रेशियो इज 1:1. अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता H2SO4 और NaOH, तो फिर रेशियो क्या होती? फिर इसके 2 है और इसका 1 है, तो इस रेशियो रिवर्स हो जाएगी. फिर अगर इसके 2 हाइड्रोजन हैं और ये 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है पर मॉलिक्यूल, लेकिन ये तो एक ही हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब 2 ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड वुड रिएक्ट विद 1 ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप सिर्फ H और OH भी देख के यू कैन गेस द रेशियो. तो यहाँ पे रेशियो इज 1:1. और व्हाट आर द मोल्स? The volume is 25 and the concentration is 4. Divide by 1000 to get into dm cube to get the moles. Moles is C into V. So what is the value of moles, Hassan? 0.1. 0.1. So please get the answer because your neutralization है तो इसका sign negative ही होगा. Sir, 3. Yeah, 3. It's 31350. It's 313. No. Then 1000 से भी divide कर. अच्छा किलो जाउल है ना, because the answer is in kilojoules, right? ये जो आंसर आएगा ना ये joules में आएगा. So let's divide it with 1000. तो I think अब हमारा आंसर मैच कर जाएगा. It should be 31.350 negative. So ये किससे मैच कर रहा है? 31. Yes, it should be B. That's the closest thing that we have, right? So make sense, everyone? First, so for this we need to know the formula. We need to know Q is MC delta T, and then once you know the Q, you divide it with the moles of the limiting reactant. How to get the Q? You should assume the mass as the total volume of the solution in centimeter cube, and then the C, which is given, it's a constant 4.18, and then the delta T is the change in temperature before and after, and that is 15. It doesn't matter it is degree or Celsius, because we are looking at the difference. The difference जो भी होगा वो same ही रहेगा. Okay. Number 10. Nitrogen monoxide
rapidly oxidizes to nitrogen dioxide, mono oxidized form. Nitrogen then dimerized to form dinitrogen tetraoxide. This is dimerized. Okay, and the enthalpy is given. Delta H formation of nitrogen monoxide is given as 91. Formation of nitrogen dioxide is given as 34. What is the standard enthalpy change for the reaction shown? What is the value of the standard enthalpy change for the reaction shown? So what do we need to do here? We need to get the enthalpy change of this above reaction. Let's write the same reaction over here and try to make a triangle if we can work. Okay, balance करने के लिए यहाँ मैंने 2 लिख लिया. It says nitrogen dye formed, it can further react to give you N2O4. And the enthalpy of this reaction is negative 58. For formation of 1 mole of N2O4, it's negative 58. And then the formation of NO, okay, and NO2 is 34. So the formation of NO, which is this thing. So formation is always from the elements, right? So let's assume, no, it's a नीचे भी reaction है ना. So NO reacts with oxygen to form N2O4. NO reacts with oxygen to form N2O4. Okay, nitrogen monoxide rapidly oxidized to form carbon. इसका तो कुछ नहीं दिया हुआ उसमें. अच्छा, ऊपर वाले को तो कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने क्यों लिख लिया? Okay, let me just try another reaction. So we are given with a reaction 2NO reacts with oxygen to form N2O4, right? और मुझे ये दिया हुआ है कि if you can convert, you can also make N2O4 from NO2, 2 moles of NO2, and the enthalpy change of this reaction is negative 58. ठीक है? फिर उसने मुझे फॉर्मेशन दी हुई है किसकी? NO की फॉर्मेशन दी हुई है और NO2 की फॉर्मेशन दी हुई है. इसको हम कर सकते हैं बड़ा सिंपल सा ट्रायंगल बना के. ये बेटा इसकी फॉर्मेशन है, इस रिएक्शन की negative 58 है. अच्छा, I am given with the formation. If you look at the data, I am given with the formation of NO. So formation का मतलब होता है something from elements. इसकी फॉर्मेशन कितनी है? It's plus 91. और NO2 की भी फॉर्मेशन है, तो NO2 के भी यही सेम एलिमेंट्स हैं और इसकी है बेटा 34. ठीक है, और फॉर्मेशन होती है 1 मोल्स की, और क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा. यहाँ पे भी 2 मोल्स बन रहे हैं तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. ओके, अब हमने फाइंड करनी है एंथैल्पी ऑफ दिस साइड. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ऑलराइट, सो देखो ये बेटा रिएक्टेंट्स है आपके पास. दिस इज योर एक्चुअल रिएक्टेंट एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. तो दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड. ये ट्राइंगल समझ आई आपको? यस, यस. इसमें डिफरेंट ट्राइंगल बनी, इसमें ट्राइंगल ही नहीं, इसमें तो मल्टी एंगल बन गया ना. सो यू वर गिवन विद दिस इज द रिएक्शन जिसकी एंथैल्पी हमने कैलकुलेट करनी, वो मैंने ऊपर लिख दिया एज इट इज. देन उसने कहा कि यू कैन मेक द सेम N2O4 फ्रॉम NO2, तो मैंने NO2 से बना दिया. एरो इज गोइंग अप. देन उसने कहा कि यू आर गिवन विद द फॉर्मेशन ऑफ NO, तो फॉर्मेशन इज समथिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स, तो मैंने NO बना दिया गोइंग अप. एंड देन उसने हमें NO2 की भी फॉर्मेशन दे दी, तो वो भी उसी एलिमेंट से बनेगा. So this is your final reactant and the other one is the final product. Now this side is 2 into 34 negative 58. मैं इस वाली साइड की बात करूं, this root must be equal to this root is equal to 91 times 2. This is the enthalpy of 91 times 2, and then what do we have? Plus x जो हमने find करना. Please do the maths. शाबाश.
Please do the Sir, maths. minus 172. So can you please check with MS? G, sir, say. For number 10. So this was a little different. मैंने भी I think इसी में देखा है इस तरह का जिसमें दो different sides में two reactions हो. But you can make that triangle or जो भी four corners की angle है using the data. So the data says this is the question that you need to ask, you need to answer. This is the equation, and we are given with another reaction through which you can make the same product. तो वो मैंने इस तरफ arrow कर दिया. You can see this is the same, and then we are given with the formation of this and also formation of this. तो वो elements से वो elements इधर भी चले गए, elements इधर भी चले गए. Then this root is equal to this root, and you can get the answer. I assume सबको समझ आ गया. All right. Number 11. Lithium aluminum hydride contains aluminum hydride ions in which aluminum has an oxidation number of +3. Lithium aluminum hydride reacts with water as shown. You see that it reacts with water to produce hydrogen gas, lithium hydroxide, and aluminum hydroxide. In this reaction, each of the 4 water molecule produces 1 hydroxide. So you have 4 water, they produces 4 hydroxide and 1 here and 3 here. It does this by losing 1 proton, which reacts with lithium aluminum. So it loses hydrogen ion and it produces hydroxide. And that hydrogen ion reacts with lithium aluminum hydride and it gets reduced to hydrogen. देखो hydrogen ion goes hydrogen. तो ये पहले +1 था, अब 0 हो गया, तो इसका oxidation number decrease हुआ. So which change in oxidation number occurs in this reaction? Okay. Aluminum increases by 1 and hydrogen decreases by 1. So aluminum पहले देख लेते हैं, is it increase or decrease? उसने हमें कहा हुआ है कि lithium aluminum hydride में इसका aluminum का oxidation number is +3. यहाँ पे भी aluminum +3 है. How? Because 1 hydroxide is -1, 3 of them are -3, so aluminum should be +3. So aluminum does not increases by +1. This is incorrect. H decreases by 2. So H कितने से decrease हुआ? H यहाँ पे +1 था और यहाँ पे H 0 हो गया. So H decreases by 1. देखो यहाँ पे H was +1 और यहाँ पे H is 0. तो +1 से 0 गया तो 1 decrease हुआ, not 2. Incorrect. H increases by 1. +1 से 0 गया, increase तो नहीं हुआ. And also decreases by 1. हाँ ये हो सकता है. H increases by 1. Okay. ये देख लेते हैं, मुझे ये बताएं. No, H is always +1. H के पास होता ही एक लूज करने के लिए, फाक्या हो it can become +2. H has only 1 electron. Okay, so यहाँ पे तो H +1 है. You know, 2 of them are +2, so oxygen is -2. यहाँ पे H देख लेते हैं, H क्या है. Lithium is +1 always. ये +3 है. Aluminum hydride. So aluminum hydride का उसने charge कहा है -3, right? Sorry, -1. That's the charge on aluminum hydride. This is exactly mentioned in the question. If you look at the statement, aluminum is +3. If aluminum is +3, then the hydrogen each should be -1. 4 of them are -4, and together they will adds up to give -1. ये बात समझ आई आपको? इसका मतलब this hydrogen is -1, this hydrogen is +1. अच्छा, अगर हम ये यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, which is a decrease by 1, और यहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है, which is increase by 1. Make sense everyone? और यहाँ पे तो वो सेम ही रहा ना. So I think C should be correct because H increases by 1 and also it decreases by 1 as it goes from +1 to 0 and also -1 से भी ये किसमें गया है, 0 में गया. बात समझ आ गई सबको? D वाला देख लेते हैं. Oxygen decreases by 1. Oxygen तो decrease हुआ ही नहीं. It is -2 here. It is still -2 here because hydrogen is +1 and lithium is +1. तो only then it becomes 0. Hydroxide में तो oxygen होता ही -1. Oxygen, you know, oh sorry, -2. Hydroxide -2, ये +1. Overall hydroxide का charge -1 होता है. It is because oxygen is -2
and hydrogen is +1. So oxygen to change हुआ ही नहीं ना, right? The vanadium salt VOSO4 is soluble in water and reacts readily with powdered manganese in dilute sulfuric acid. So we have manganese powder, solid. We have vanadium salt. In the presence of sulfuric acid, you get vanadium sulfate 3, vanadium 3 sulfate, because the charge of vanadium is +3 here. How do I know? Because it says 3 with sulfate. So only if vanadium is 3 and sulfate is -2, only then you can make this formula, no, which is written above. And then manganese 2 sulfate, because manganese is a transition element. Sulfate is -2, so manganese has to be +2. What is the correct answer here? Which statement about this reaction is correct? So let's look at the charges first. Manganese is 0 here, it is +2. Vanadium sulfate is -2, oxygen is -2, so vanadium should be +4 to make it 0. Vanadium is +3 here, and yes, so vanadium goes from +4 to +3, and manganese is oxidized. Vanadium is reduced. Hydrogen is oxidized. Hydrogen to kuch change nahi hua. If you look at hydrogen, yahan pe bhi +1 hai, yahan pe bhi +1. Manganese is reducing agent. Yes, manganese oxidizes itself. Manganese kya ho rahi hai? Manganese oxidizes itself. So something that oxidizes itself is a good reducing agent, a correct statement. Sulfuric acid is oxidized. No, sulfuric acid is just a catalyst. No change as far as the charge is concerned. Oxidation state of vanadium changes from +5 to +3. It goes from +4 to +3, not +5 to +3. So this is incorrect. Makes sense, everyone? Yes. Number 30. In which equilibrium, मैं 15 तक करूंगा, then आप लोग करेंगे साथ-साथ, फिर मेरी break है. In which equilibrium will an increase in pressure at a constant temperature increases the yield of the products on the right side? So we need to increase the pressure, and it must shift equilibrium to the right side when you increase the pressure. So whenever you increase the pressure, equilibrium goes to the side with fewer moles of gas. And in option number 1, you can see that we have no moles of gas here, and we have 1 mole of gas here. So if you would increase the pressure, it goes to the left side. The yield of product would decrease. So it is not a correct option. And in second option, we have 4 moles of this gas and 1 mole of this. So you have 5 moles of gases on the reactant side, and you have 4 moles of gases on the product side. When you increase the pressure and everything is gas, it will go to the right side, increasing the yield. Here you have equal moles. You have 2 moles on the reactant side. You have equal moles on the product side, because this represents the moles. इनके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये 1-1 है. So no effect on the change of pressure on the position of equilibrium. So we have, this is solid. These are 4 moles of gas here, and you have again 4 moles of gas here. This is solid. Absolutely no change. So B should be the correct answer. Hydrogen iodide is added to an evacuated reaction flask. The vessel is sealed and warmed. A decomposition reaction occurs. Hydrogen iodide formed. Some hydrogen iodide remains. So not all of the hydrogen iodide decomposes. Kuch reh gayi usne ka. When equilibrium is established, the total pressure is 1.2 times 10⁵ Pascal. Partial pressure of hydrogen is given, which is 4 into 10⁵. Hydrogen iodide, all are gases. What is the value of Kp? Let's first use the equation. So since we know that hydrogen iodide is given, which is gaseous, it decomposes to form H2 and iodine, purple vapors. So balance this, we need to put 2 over here, right? Now, initially, when the equilibrium is established, the total pressure is this much. Okay, so hydrogen, the partial pressure of hydrogen is 4 times 10⁵. Oh, sorry, hydrogen का इतना, अगर hydrogen का इतना है तो iodine का भी इतना ही होगा, क्योंकि ratio 1:1 है. इसका भी 4 times 10⁵ होगा. But what should be assumed? Hydrogen iodide is added to evacuated reaction flask. Vessel is sealed and warmed. A decomposition occurs. Hydrogen and iodine form. Some
hydrogen iodide remains. When equilibrium is established, the total pressure is 1.2 times 10 raised to power 3. That is the total pressure. अच्छा, total pressure ये है. We are given, देखो total pressure किस वजह से आएगा? Total pressure would be because of hydrogen iodide, because of hydrogen and because of iodine. इन सब के pressure को add करेंगे तो you'll get total pressure which is 1.2 times 10 raised to power 5. अच्छा, उसमें हमें उसने हाइड्रोजन का बता दिया. अगर हाइड्रोजन का इतना है तो आयोडीन का भी इतना ही होगा. इसको ऐड करें जरा, कितना बनता है? हाइड्रोजन के साथ Sir, कितना 8 बनेगा ये? times 10 to the power of 3. 8 times 10 raised to power 3. सो हमारे पास टोटल प्रेशर है, उस वो हम इसमें से माइनस कर देंगे. 8 times 10 raised to power 3, वो आप इसमें से माइनस कर दो. 1.2 into 10 तो वो किसका प्रेशर बचेगा? That would be the partial pressure of hydrogen iodide. शाबाश. 1.12 times 10 to the power of 5. Now we know the partial pressure of each reactant and product. We can now use the formula Kp, which says partial pressure of the products over partial pressure of the reactants times coefficient. इसका coefficient 2 है तो वो square power में आएगा, और उनका कोई coefficient नहीं है तो उनको आप simply ऐसे ही multiply कर दें. Please do the maths everyone to get the Kp thing. Sir, 1.28 times 10 to the power of -3. It is exact option number B. I assume this should be the correct. Because जब भी exact answers आते हैं ना, तो normally वो correct ही होते हैं. Yes, is it correct? Number 15. इतनी calculation के बाद. Okay, so इसमें देखो, the only way forward was the total pressure, and we are given with the pressure of one thing. So अगर उसका यो है तो उसके साथ वाले का भी वही होगा, because ratio is 1:1. वो total pressure हमने add किया और उसको subtract कर दिया from the total pressure, and that remaining is the pressure of the reactant, and that's how we got the answer. Okay. Number 15, everyone. So for 15, the equations for two reactions are shown. NOBr reacts, which is reaction X, to produce 2NO and bromine, and NOCl produce NO and Cl2. Seems similar, and this reaction is called reaction Y. Two reactions have similar mechanisms, right? Two reactions have the similar mechanisms. The initial rate of reaction X is greater than the rate of reaction Y. So X is greater. I think it is obvious, because when the myriad under identical, even the temperature, pressure, and the concentration are same, X would react faster. The only thing different in X is the presence of bromide, whereas in Y we have chloride. So why do you think X should be greater than reaction Y? Anyone in the class? Why is it react quicker? I think हमने बताया हुआ था आपको कि when you go down, the atomic radius increases. Chlorine is above, bromine is down. ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस बड़ा है, इसकी जो नेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है शेड इलेक्ट्रॉन से वो वीक होती है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन की कम होती है, जल्दी ब्रेक हो जाता है टू गेट द प्रोडक्ट्स. ओके, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस? Activation energy of X is less than that of Y. Seems correct. That's why it is faster, na? Under same condition. If you provide same temperature, pressure, and concentration, even then one reaction is faster than the other. That means that particular reaction have a lower activation energy. The BR-BR bond is weaker. अच्छा, ये बात ठीक है, BR-BR bond it is weaker. लेकिन मेरी बात सुनो, रिएक्शन क्या इस BR-BR पे डिपेंड कर रहा है या रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है? आई मीन रिएक्शन तो रिएक्टेंट वाली साइड पे डिपेंड करेगा ना. दिस इज द प्रोडक्ट, तो रिएक्शन तो इसका हो रहा है, तो प्रोडक्ट में डेफिनेटली BR-BR हैव वीकर बॉन्ड, बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन्स आवर क्वेश्चन. A higher frequency of collision between the molecules occur between a higher frequency of collisions between the molecules of NOBr occurs than the molecules of NOCl. Initial Sir, can rate you of repeat point two?
पॉइंट 2 में बेटा उसने कहा कि Br bond is weaker than Cl. This statement is correct, but this statement does not explain the difference of the rate of reaction. Why? Because both chlorine and bromine are on the product sides. The rate of any reaction does not depend on the product, but it depends on how fast or how quick the reactants can react. So if यहाँ पे तो उसने product की information दे दी ना, Br is weaker, so it has nothing to do with. Okay, a higher frequency of collisions between the molecules of NOBr occurs than between the molecules of NOCl. बात तो ये ठीक लग रही है 1 and 3, लेकिन 1 and 3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं. आई थिंक 1 वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है. अगर कोई बच्चा देखे, इज इट स्टेटमेंट नंबर सी? A higher जी सर. frequency, a higher frequency of collisions between the molecules of NOBr. Two reactions. Sir, the conditions are identical, so how? A high frequency of collisions between the molecules of NOBr. If you are providing the same amount of temperature and pressure, then there must be no. अगर वो रिएक्शन फर्स्ट वाला रिएक्शन फास्ट है तो उसका मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा है, तभी तो वो फास्ट है. क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 तो इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 तो है ही करेक्ट. तो यहाँ पे हमें हेल्प मिल गई कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो आइदर इट कुड बी ए और सी. तो क्योंकि सेकंड इनकरेक्ट है तो फिर ऑप्शन तो सी ही होना चाहिए. बट व्हाई नॉट 3? आई विल चेक दिस वन. A higher frequency of collisions between molecules. The So the direction of collision amount is same, but it's broken easier for Br. maybe that makes little sense, but if collisions is it must form the same amount of products. But yes, I can take this for now because no other logic works here. Okay, number 16, it's your favorite, Boltzmann distribution, everyone's favorite. यहाँ से लेके 20 तक आप सबने करने, शाबाश. 16 till 20. इजी है अब तो. इनऑर्गेनिक आने वाला है. फोर मिनट्स फॉर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बेस्ड नहीं है, सीधे सीधे लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. Shabash. Anyone need help? Can ask.
2 minutes. Done. All right, last 1 minute, everyone. Abdul Samad, have you done the thing? All right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The table compares calcium with barium and calcium carbonate with barium carbonate. All right. Reactivity of element with water. We know down the group, since both are present in the same group, down the group, the reactivity increases. So the question is, magnesium, calcium, and barium. This is how they are present. Barium is more reactive. Barium should be more reactive. And then we have stability of carbonate. Down the group, stability increases. Barium carbonate is more stable. So it should be A. Sodium, magnesium, aluminum. Period 3 elements of the periodic table. 3 statement about the oxide of and chloride of these elements are given. The ionically bonded oxide all react. We know that ionically bonded oxide, they are basic. So ionically bonded hote hain like sodium, magnesium, aluminum, they are ionically bonded. They would react with dilute HCl because they are bases. They are what? They are bases, right? So basic oxide react with acids. The statement 1 is correct. All metal chlorides produces a neutral solution when added to water. So we have, I think this is not correct because sodium chloride produces neutral solution. So does magnesium chloride, slightly acidic. Chalo isko neutral maan lete hain. Aluminum is a metal. When you put aluminum chloride in water, so it form aluminum, it form HCl, acidic solution banta hai, neutral nahi rehta, it hydrolyzes. Okay? So it does not form a neutral solution. Incorrect statement. It says all metals. This is not true for all, but for sodium and magnesium. The two most electronegative element both form covalently bonded. That is correct. देखो most electronegatively कौन से होंगे? The one on the right. I mean, these are two. जो जितने ज्यादा right पे जाते जाओगे electronegativity increase होगी. इस केस में silicon और phosphorus. So silicon chloride is covalent. So does phosphorus chloride. Both are covalently bonded. 3 is correct. Has to be 1 and 3. C should be correct. In this reaction, 1 and 2, X represents the element in period 3. In each reaction, X is forming a product where X has the highest oxidation state. So in reaction 1 and 2, X represents an element of period 3. So this is an element of period 3. And in each reaction, X forms a product where X is in the highest oxidation state. The highest oxidation state ka matlab, it is equal to number of valence electrons.
because oxidation state depends on valence electron और valence electron depends on group number. तो since ये period 3 का है तो ये जिस भी ग्रुप का होगा हमें पता चल जाएगा ये highest oxidation state. Reaction 1, chlorine reacts with element X to form XYClZ. And in other reaction, it reacts with oxygen, लेकिन इन दोनों में in each reaction X forms a product where X is in highest oxidation state. So which ratio shows a steady increase from sodium to phosphorus? That is interesting. अच्छा, उसने कहा कि X is an element of period 3 and which ratio shows an increase from sodium to phosphorus? ओके, ये कितने बच्चों ने किया बाय द वे? कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन किया नंबर 18? हसान, फाकिया, मारवा? सर आप ऐसे करेंगे ना कि आप NaCl फिर MgCl2 you write them all and see their ratio of their yes. So हम इसको, मारवा आपका आंसर क्या? And yes. Sir, both are increasing. अच्छा, आपका ऑप्शन डी बन रहा है ना, both Z and Y and Q and P. Okay. So let's assume कि X is sodium and it is sodium chloride. तो ये +1 होगा, ये -1 होगा. Which row? And then let's assume ये मैग्नीशियम है तो ये +2 होगा, ये अभी भी -1 है क्योंकि क्लोरीन का तो कभी चेंज नहीं होगा. फिर वो एल्यूमिनियम मान लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा बढ़ता ही है ना. सो सोडियम से फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन डी ही होना चाहिए. Which ratio shows steady increase from sodium to phosphorus? I think, is it option number D? Can you please check? जी सर, डी है. Yes, sir. डी है ना. इसमें स्टेटमेंट उसने ऐसे घुमा के दिए कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या और पीछे स्टेटमेंट क्या. बट द क्वेश्चन इज सिंपली it's about oxidation state. So we know that from sodium to phosphorus the oxidation state increases regularly. So ratio भी इसकी क्या होगी? Increase होगी. अच्छा, यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 1:2 हो जाएगी, यहाँ पे 1:3 हो जाएगी क्योंकि 3 क्लोरीन लगेंगे, फिर 4 लगेंगे, फिर सो रेशियो शुड. और इसी तरह उसमें भी you would have an increased ratio. L, M and N are 3 different elements from period 3 of the periodic table. ऐसा यहाँ पे inorganic chemistry test कर रहे हैं. L is the element whose atoms have 3 unpaired electron. तो आपको पता है period 3 में एक ही element है जिसके 3 unpaired है, उसका atomic number 15. group 5 वालों के 3 unpaired होते हैं, group 5 वालों, and that should be phosphorus. M is the element with the highest electrical conductivity in the period. So मुझे ये बताएं कि पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आपको पता है एल्यूमिनियम है, so it should be aluminum. Aluminum loses 3 electron per atom, so M is aluminum. N is the element with the highest melting point, so N is silicon. ऐसा ही. Okay. अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले एल्यूमिनियम आएगा which is M, उसके बाद सिलिकॉन आएगा which is N, उसके बाद फास्फोरस आएगा which is L. देखो स्टेटमेंट नजर आ रही है. ओके, which statement about L is correct? इसका मतलब फास्फोरस की बात पूछ रहा है. Starting with D, L has a higher atomic number. I think ये बात ठीक है. L has a higher atomic number, इसका 15 है, इसलिए मैंने ऑर्डर में लिख दिया. This is correct. L has a lower atomic number. L has a lower atomic number. L has a higher atomic number than M, but lower. No, L has a higher atomic number than both. It should be D. I assume it is correct. इसका तो क्या आंसर होना चाहिए? If a catalyst added peak will be lowered, catalyst ऐड करने से peak तो लो नहीं होती ना, ये भी तो वैसे निकल गए. If a catalyst is added, peak will be the same. Activation energy move to the left. ये बात ठीक है. तो activation energy यहाँ पे आ जाएगी. Peak will remain same.
पीक विल बी द सेम, एक्टिवेशन एनर्जी राइट को नहीं जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी लेफ्ट को जाएगी। सबको बात समझ आ गई? यस यस, मेरा ख्याल अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है 21 से। ओके जी, नेक्स्ट 5 एवरीवन, शाबाश। नेक्स्ट 5 फ्रॉम 20 to 25, 21 से 25। Five minutes for next 5 questions, everyone. ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़ा कम टाइम लेते हैं, एक्सेप्ट पॉलीमर उसके क्वेश्चंस, आइसोमरिज्म के। उसके अलावा ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक, फिजिकल स्पेशली कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है, सिंपल नॉलेज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ऐसा ही किया सबने? यस। So you put both, barium and magnesium and sulfur in sodium sulfate. We know doubt top to bottom sulfate की solubility decrease होती है, तो barium would form more sulfates, more precipitates, and यहाँ पे top to bottom hydroxide कम होते हैं, तो top वाले less soluble होते हैं, तो you would get more precipitate for magnesium. J dissolve, सबने कर लिया ये? चलिए 2 मिनट और दिए आपको। ये 30 seconds का question है, less than 30 seconds. Done everyone? 1 minute. Excellent, Chavez.
30 seconds. All right. Number 22. J dissolve in water to give an aqueous solution of K. I mean aqueous solution K. पहले J था पानी में डाला K बन गया solution बन गया. K gives dense white PPT when silver nitrate. तो जब भी सिल्वर ऐड करने से व्हाइट पीपीटी हैं वो हमेशा किसके होते हैं? सिल्वर क्लोराइड के. तो दैट के मस्ट हैव क्लोराइड. इट शुड हैव क्लोराइड. ओके. व्हेन हीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब उसको हाइड्रो ऑक्साइड से हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो अ गैस इज गिवन ऑफ दैट टर्न द पेपर ब्लू. वी नो दैट इज ओनली वन गैस दैट turn the paper blue, and that is ammonia. And that is produced when ammonium, कल भी बताया था आपको, reacts with hydroxide and they produce ammonia gas and water. So it should be ammonium and chloride. They should be the right answer. For 23, ammonium sulfate and ammonium nitrate are as fertilizers. These salts have different percentages by mass of nitrogen. They have the same effect as each other on the pH of wet neutral soil. Which row is correct? So, higher percentage of nitrogen. How do we get the percentage? I mean, मैं एक की कर देता हूँ, दूसरे की आप लोग खुद कर लेंगे. I assume आपने ऐसे किया होगा कि जब भी किसी चीज की परसेंटेज फाइंड करनी है हमने, तो हमने उस मॉलिक्यूल में देखना है वो कितने एटम्स हैं. We have 2 nitrogens, so 2 times nitrogen का AR, divided by पूरे मॉलिक्यूल का MR times 100, you will get the percentage of nitrogen. Okay, so हमने देख लेना किसमें ज्यादा परसेंटेज है. These salts have different percentages. Okay, they have the same effect as on the pH of the neutral soil. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें अमोनियम है. इसमें अमोनियम है, राइट? तो अमोनियम जो होता है, ओके, ammonium and nitrate. Ammonium behaves like an acid because ammonium loses hydrogen ion to become ammonia. So they both have ammonium ions, ammonium and ammonia. And ammonium behave like an acid. तो एसिड किसी भी चीज की पीएच को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ये बताएं. एसिड्स, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीएच उतनी कम होती जाएगी. वीक भी होगा, होगी कम. तो एसिड इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज द पीएच. तो डिक्रीज वाला ऑप्शन ठीक है. और उस परसेंटेज से आप देख लेंगे कि विच वन हैज अ ग्रेटर. इस फॉर्मूला से आप देख लोगे. आई एम श्योर आपने सॉल्व किया. तो विच वन, सल्फेट और नाइट्रेट, किसमें परसेंटेज ज्यादा है नाइट्रोजन? यस, किसी ने नहीं सॉल्व किया. Sir, nitrate. So nitrate, then it should be A, right? Because pH will decrease hogi because ammonium act as a acid. Ammonia is a base. Ammonium are acid because they lose proton. The equation shows the reaction that occurs between carbon monoxide and nitrogen monoxide in a reaction. Which statement is correct? The catalysts use a finely divided iron. So in iron, in this reaction, we use rhodium or palladium as catalyst, not iron. The reaction prevents greenhouse gas emissions. It is producing greenhouse gases, so it does not prevent. The reaction reduces the possibility of formation of photochemical smog. That is correct because oxide of nitrogen, they causes smog. So when oxide of nitrogen are being used to produce nitrogen gas, the chances of photochemical smog decreases. Option C seems to be correct. The reaction results in increase in ozone depletion. Why? I mean, why? Ozone depletion, it happens because of chlorofluorocarbon, have nothing to do with, carbon dioxide, nitrogen. Organic.
Which compound has the molecular formula? This one. ये तो सीधा सीधा कैलकुलेट करना है हमें. तो किसका है ये? इसका मैं बता देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 कार्बन में मैंने जस्ट गेस कर रहा. अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ, उनके पास 1 हाइड्रोजन है, जहाँ पे सिंगल है उनके पास 2 है. ये बात याद रखना. किसके ऑलरेडी 4 पूरे. This brother already has 4 electrons, I mean bonds. So how many hydrogens? 2, 9. 4, 6 and 2, 8. 8 है इसमें. ये तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें 10 चाहिए. Yes, 2, 4, 6, 8. इसमें आ जाए 1 2 3 4 5. इसमें तो अच्छा ये भी है ना 6. So we have 2 hydrogens here, double bond बना. You should have 3 here. यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे 3 आएंगे. So 3 3 6 carbons and 2 3 4 7 9 and 3 12. यहाँ पे तो 10 चाहिए, ये इंक्रीज होगा. C C C C C C. Okay, so terminal always get 3. यहाँ पे भी 3 आएंगे. कितने कार्बन हैं टोटल? 1 2 3 4 5. हमें इसमें तो कार्बन ही 5. फिर ऑप्शन ए ठीक होगा. इसमें तो कार्बन ही 5 है भाई. इस पर तो तुक्का भी नहीं लगता. 1 2 3 4 5 6. Okay, so 3 hydrogens, 1 hydrogen, 2 hydrogens, 2 hydrogens and 2. So let's count the carbons. 1 2 3 4 5 6. Let's get the hydrogens. I mean 3 4 6 8 and 10 and 1. I think A is correct because this has the exact same formula as given. Okay, the general formula of a non-cyclic alcohol is shown. It should be in a straight alcohol or branch, but it does not have any ring structure. How many different structural isomers are there for N3 and N4? So alcohol है यार आपके पास और propanol. N3 का मतलब propanol. So this is propanol. इसके कितने आइसोमर बना सकते हैं? एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो. इसका और भी कोई आइसोमर बन सकता है? Can you form any other isomer of it? प्रोपेनॉल का. इसमें तो चेन बड़ी छोटी हो ही नहीं सकती. अगर आप OH इधर भी लगा दोगे, if you put OH over here, it is still the same structure as first one. So you can make a maximum of 2 isomers. ठीक है. अच्छा, फिर N4 के साथ टाइम अगर सेव करना है तो N4 के साथ ज्यादा बन जाएंगे. देख लेते हैं कितने बनने. N4 के साथ 4 बनने चाहिए. एक यहाँ लगा देते हैं, फिर एक यहाँ लगा देते हैं. अब चेन छोटी बड़ी कर देते हैं. फिर यहाँ लगाया और OH यहाँ लगा दिया और फिर चेन ऐसे ही रखी और OH यहाँ लगा दिया. देखो कितने बन गए 4. अगर हम नहीं भी करते तो जब कार्बन ज्यादा है तो फिर 2 तो हो नहीं सकता, 4 ही होगा ना. ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए. मेक सेंस एवरीवन? यस यस. Compound XC5H10O3 has 1 chiral carbon atom per molecule. Compound X produces bubbles with sodium but not with sodium carbonate. So if something reacts with sodium but not with carbonate, तो वो क्या चीज हो सकती है? क्या चीज हो सकती है? Please. If something reacts with both, that should be an acid. But if an X compound reacts only with metal, so that is an alcohol. क्या है? That is an alcohol. Excellent. Okay. अब हमने अल्कोहल ढूंढना है सब में. अच्छा, उसने कहा एक कायरल कार्बन भी है. That should be have a chiral carbon. D नहीं हो सकता because D में कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड react with both. उसने तो कहा सोडियम कार्बोनेट से react नहीं करता. ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा. This have an alcohol here. Ester है तो it make no difference. And it has a chiral carbon. तो ये मुझे तो B आंसर लग रहा है, but let's look at. इसको ओपन करके लिख लेते हैं जरा. So this is the first carbon. It have OH. It has 2 hydrogens. Of course, ये तो chiral carbon नहीं होगा क्योंकि इसका 2 हाइड्रोजन है. The next carbon has 1 hydrogen. The next carbon has CH3, and the same carbon is connected to C double bond O and O, and further CH3. So we can see that this carbon, this beautiful carbon, is chiral carbon because it is connected to 4 different groups. Right?
it is connected to 4 different groups. It is chiral, and since it has only alcohol which react with sodium but it doesn't react with this, so it should be B. अच्छा, यहाँ पे इसके पास कोई chiral carbon नहीं है. This carbon has the same two CH3s attached, and this carbon is bonded to oxygen, double bond, and this has 3 hydrogens, so this is not something which have chiral carbon. B should be the correct answer. Ethane react with excess of chlorine in the presence of UV to form mixture of products. How many of these products contain 2 carbon atoms and 1 or more chlorine atoms? Interesting. Ethane, C2H6, reacts with chlorine. It can form C2H5Cl. It can form C2H4Cl2, C2H3Cl3. I mean, you're just removing 1 hydrogen and adding 1 chlorine. C2HCl5 and CCl6. How many of these products contain 2 carbon atoms and 1 or more chlorine atoms? तो कितने बनाए मैंने? एक ये कॉम्बिनेशन, फिर एक कार्बन बढ़ाता कम करता गया और एक हाइड्रोजन, तो कितने बन गए? आई थिंक टोटल 6 बनने के बचा चांसेस है 6 ऑप्शन में है. इफ इट इज 6, how many of these products contain 2 carbon atoms and 1 or more chlorine atoms? If it is 6, please, for 28. Sir, it's D. सर 9 कह रहे हैं. अच्छा जी, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लें. Ethane reacts with excess of chlorine in the presence of UV to form a mixture. अच्छा, how many of them contains 2 carbon atoms and 1 or more chlorine atoms? Sure. 1, 2, हमारे 6. How many of these products contain 2 carbon atoms and 1 or more chlorine atoms? Carbon. Sir, is it involving like maybe optical isomerism as well? How many products? I don't think यहाँ पे कोई isomerism का उसको. Why he would add optical isomers in substitution reactions? But what's the और इसकी क्या possibility बन सकती है? ओके, मुझे लगता है कि हमने डिस्प्लेड फॉर्मूला बना के इसको कोई कर सकते हैं, बट जो मेरे माइंड में चल रहा है. Sir, maybe like सर वो फ्री रेडिकल. आई थिंक अगर फ्री कोई फ्री रेडिकल रेडिकल को भी प्रोडक्ट मान सकते हैं, बट फ्री रेडिकल इज नॉट अ प्रोडक्ट. फ्री रेडिकल एक्चुअली यूज हो जाता है ना, वो प्रोडक्ट तो नहीं है वो. लेकिन वो भी एक पॉसिबिलिटी. आपकी बात ठीक है शाबिश खान, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्लोरीन यहाँ लगाया और नेक्स्ट टाइम वो क्लोरीन यहाँ हुआ, ये बात तो एक ही है, ये तो बात ठीक नहीं है. क्लोरीन यहाँ, हाँ ये हो सकता है कि जब Cl2 था, व्हेन इट वाज Cl2, तो वो Cl2 ये वाला भी हो सकता है, और Cl2 2 कार्बन हैं, दोनों पे Cl आ सकता है, ये भी तो हो सकता है ना. तो दे बोथ हैव दिस फॉर्मूला C2H4Cl2, बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन. तो एक ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, हमें 3 करने हैं. अच्छा, बाकी दो क्या हो? एक तो ये हो गया. अच्छा, फिर 3 क्लोर कार्बन का भी ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग यार. देखो, इफ देयर आर 3 क्लोरीन्स, तो वो तीनों क्लोरीन एक के हो सकते हैं, या यूं हो सकता है 2 क्लोरीन ऑन 1 कार्बन एंड 1 क्लोरीन ऑन द अदर. यस, ये भी हो सकता है. तो कितने हो गए? अभी तो 8 हुए. एक और इसी तरह की पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी. कैन यू प्लीज डबल चेक द आंसर अगेन फॉर 28? Yes, Chavez.
जी It's सर, D. पक्का डी है। पक्का डी। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? बन तो सकती है। एक हमने बनाया क्लोरीन, दो हमने प्रेडिक्ट कर ली, अब एक का मसला है ना। चलो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये हम बिल्कुल इसके करीब पहुंच गए। थर्ड पॉसिबिलिटी है बट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 29, व्हेन ब्रोमोइथेन रिएक्ट विद हॉट एथेनॉलिक NH। मुझे बताएं कि ब्रोमोइथेन इज अ कार्बन एंड हैलोजन विद 2 कार्बन एंड देन ब्रोमीन। दिस इज ब्रोमोइथेन, राइट? जब इसका हम रिएक्शन करेंगे विद एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे रिएक्शन कर रहे हैं इसका हम? एथेनॉलिक sodium hydroxide. So what would happen? Do you think the substitution or elimination? This is ethanolic. The elimination would occur and you will get an alkene. You would get what? An alkene. A gas is formed. This gas dechlorizes bromine. I mean, we will get ethene that will definitely dechlorizes. What is the colorless gas? It should be ethene. इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता. So 29 should be C. ये तो इसमें तो बाकी ऑप्शंस, आई डोंट थिंक बाकी ऑप्शंस कुछ वैलिड भी है, राइट? यही बन सकता है। आत्मा, इनको नीचे नीचे ले दो बेटा। नंबर 30, I'm sitting at third floor और आज मैंने एसी नहीं ऑन किया तो गर्मी। Alkynes are hydrocarbons with triple bond. तो जिस तरह alkenes होते हैं ना डबल बॉन्ड, तो ये alkynes हैं, they have the triple bond. Like alkenes, alkynes take part in addition reactions. A saturated compound can be formed. तो मुझे बताएं जब डबल बॉन्ड होगा उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब वो सैचुरेटेड हो जाएगा। एल्काइन होगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेंगी तो वो भी सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। For example, this is ethyne reacts with excess of hydrogen to form ethane. तो ये इथाइन उसने क्वेश्चन में बता दिया हमें। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, पहला हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड में जाएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में जाएगा। Propyne undergoes an addition reaction with excess of HBr in 2 stages. Marconi curve rule applies to addition of HBr at each stage. What is the main problem? It's easy, bro. So we have propyne. It should have 3 carbons, and between any 2 carbon, there is a triple bond. So what is Marconi curve rule? This has 1 hydrogen, and this would have 3, and center one would have absolutely have no hydrogen. अब मुझे बताएं HBr में H किसको दूं और bromine किसको दूं? Imagine this is first and this is second carbon. Which carbon will get hydrogen and which will get bromine? One will get hydrogen. Excellent. According to Marconi curve rule, you will get double bond आ जाएगा यहाँ पे. This brother will get Br and this brother will get hydrogen. इसके पास पहले से भी एक था. अब एक और HBr ऐड किया. 2 स्टेजेस है ना, डबल बॉन्ड ये खत्म हो गया, फिर हाइड्रोजन इसके पास आएगा और फिर ब्रोमीन इसके पास आएगा. ये किससे मैच कर रहा है ये वाला? ये तो नहीं है क्योंकि ब्रोमीन अलग अलग है. ब्रोमीन एक के पास ही होने चाहिए. इसमें ब्रोमीन टर्मिनल वाले को दे दिए. ब्रोमीन किसके पास है? ब्रोमीन तो सेंट्रल वाले के पास है. तो ब्रोमीन सेंट्रल वाले के पास इधर ही दोनों तरफ CH3, इट शुड बी D. मेक सेंस एवरीवन? यस. ओके. Bromine reacts with alkenes by an electrophilic addition mechanism in which cation is formed as an intermediate. So electrophilic addition हमेशा alkene का होता है, right? Which mixture will produce the most stable intermediate cation? Okay, that's an interesting question. मुझे I don't know why C is better than B and D, because most stable intermediate का मतलब है कि the carbon with positive charge must be directly connected with number of carbons. तो इसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है methyl propane. This is methyl propane and इसका ब्रोमीन से प्रोपीन है ये, सॉरी. इमेजिन ये दिस इज methyl propane, ये वाला है, और इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन से. आपको पता है ना, होता ये है कि
रिंग अटैक्स और ये इधर चला जाता है, तो वन ऑफ द कार्बन विल गेट द ब्रोमीन एंड अदर कार्बन विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। अब मुझे ये बताएं कि इन दो कार्बन में से किसको मैं ब्रोमीन दूं और किसको पॉजिटिव चार्ज करूं। शाबाश। If this is first carbon and this is second, which carbon will get the bromine first and which will get the positive charge? And why? बता दो यार, तो इजी है। इसको ब्रोमीन मिलेगी और इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसको देते हैं जो ज्यादा स्टेबल होता है, विच फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे तो वो तो प्राइमरी बनेगा। अब मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन है, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? दिस इज टर्शरी because the positive charge carbon is directly bonded to 3 carbons. तो टर्शरी से ज्यादा कुछ स्टेबल हो ही नहीं सकता, यही होना चाहिए। टर्शरी से ज्यादा स्टेबल क्या होगा? मोस्ट स्टेबल यही है। प्रोपीन का मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रोपीन ये है, दिस इज प्रोपीन। अच्छा, अगर Br हम Br2 ऐड कर रहे हैं, इसमें ब्रोमीन किसके पास जाएगा? ब्रोमीन जाएगा इसके पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ भी गया तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? This is a secondary carbocation because it is bonded to 2 carbons. It is less stable than tertiary. इथीन तो प्राइमरी वाला बनाएगा, और ऊपर वाला देख लेते हैं 3,3 डाइमेथाइल पेंट-1ene। तो पेंट-1ene है ना, तो ये भी सेकेंडरी बनाएगा। पेंट-1ene है, राइट? दिस इज पेंट-1ene, 5 कार्बन है, पहले पे डबल बॉन्ड है और 3,3 डाइमेथाइल है। दिस इज 3,3 डाइमेथाइल पेंट-1ene, तीसरी के ऊपर 2 मिथाइल लगे। अब Br इसको दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस पे। अब मुझे बताएं ये कौन सा कार्बोकेटाइन? दिस इज स्टिल सेकेंडरी बिकॉज द कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन्स। तो C is the correct answer. Halogenoalkanes react with hot ethanolic potassium cyanide. Mechanism is either 1 or 2. We know whenever there is 1, it is because of tertiary halogenoalkane, and this is due to primary halogenoalkane. So which statement is correct? All secondary halogenoalkane, secondary ka we are not sure. They may react via primary via SN1 or they may react via SN2. So all secondary का हमारे पास कोई confirm clue नहीं है। Both halogenoalkanes and cyanide are involved in initial step of SN1. देखो SN1 जो होता है 2-step mechanism, और ये टर्शरी हैलोजिनोएल्केन्स के लिए आपको पता है कि टर्शरी हैलोजिनोएल्केन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टर्शरी हैलोजिनोएल्केन, तो फर्स्ट स्टेप में ओनली रिएक्टेंट इज इन्वॉल्वड, द बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल गेट अ कार्बोकेटाइन। उसने कहा इनिशियल स्टेप में सब कुछ इन्वॉल्व होता है, विच इज नॉट करेक्ट। नॉट बोथ आर इन्वॉल्व, ओनली द हैलोजिनोएल्केन इज इन्वॉल्व। क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद HCN via SN1 mechanism only. क्लोरोइथेन मुझे बताएं, इज इट अ प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी हैलोजिनोएल्केन? ये क्या है? ये तो प्राइमरी है। तो प्राइमरी किससे रिएक्ट करते हैं? प्राइमरी रिएक्ट वाया SN2, तो डी ही होगा। SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ शॉर्ट लिव्ड नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये बात ठीक है। हाउ डू आई नो? देखो, फॉर एग्जांपल यू हैव, दिस इज योर हैलोजिनोएल्केन, प्राइमरी है, मैं SN2 का मैकेनिज्म बना रहा हूं, एंड वी नो दैट कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, तो दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। सो होगा ये कि आप हाइड्रोक्साइड का इसका रिएक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल द लोन पेयर विल अटैक ऑन द कार्बन। जैसे लोन पेयर अटैक करेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन वो ट्रांजिशन स्टेट आएगी। वो क्या है? लेट मी ड्रॉ द ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में द कार्बन, ये वाला कार्बन मैंने ड्रॉ किया, इसके पास हाइड्रोजन है ये वाला, इसके पास एक और हाइड्रोजन है, मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, और इसी कार्बन के साथ CH3 भी लगा हुआ मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है Br, ये वाला बॉन्ड, और एक बॉन्ड बन रहा है विच इज OH वाला बॉन्ड। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? हाउ मेनी बॉन्ड्स डज दिस कार्बन हैव? इसके 5 बॉन्ड बन गए ना। तो इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेट है ओवरऑल, हाइड्रोक्साइड तो नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोक्साइड इज ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज, इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सो SN1 mechanism, short lived negatively charged transition state is formed. This is correct. All 3 options are not possible. X, Y and Z are 3 isomeric alcohols.
सो वी हैव X, Y एंड Z। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस कार्बन के पास कोई भी OH, देखो द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू OH ना, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी है, 2 या 3। अगर उसके पास 1 हाइड्रोजन है और वो OH से अटैच है, वो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और अगर उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो दैट इज टर्शियरी। ओके, separate sample of each alcohol is bound with mild oxidizing agents. We know primary alcohols oxidize to give aldehyde and ketone, aldehyde and carboxylic acid. Secondary alcohol oxidize to give you ketone, or tertiary alcohol cannot be oxidized, right? Okay, so one of these alcohols, when dehydrated, will give a pair of cis trans isomers with a molecular formula of C5H10. Okay, which row is correct? Reacts with mild oxidizing agent. तो mild oxidizing agent से react करेंगे only X and Y, because Z is a tertiary alcohol, it does not react, तो Z तो होगा नहीं, it should be X and Y. Give cis trans isomers. तो हम दोनों को बना के देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, cis trans isomer देगा कौन? ये Y देगा। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि cis trans isomer की कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड। अब इनके बीच में देखो, इसका OH उड़ेगा, जब डिहाइड्रेशन होगी इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इस वाले कार्बन के पास तो अभी भी 2 हाइड्रोजन तो है ना, तो डू यू थिंक इट विल गिव cis trans isomers? ये देगा cis trans isomerism? नहीं देगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। यहां पे आ जाओ, इसका OH जाएगा इस कार्बन का, और इसके एडजेसेंट वाले का H चला जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ Y। आप लेट मी ड्रॉ द Y। CH3 CH2 देन CH, एंड उसी के पास OH है, और फिर CH2 और फिर CH3। अब देखो फॉर एग्जांपल ये उड़ा दिया मैंने, अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। एक तरफ मैं हाइड्रोजन बना देता हूँ, दोनों के नीचे लिखे हुए ये देखो, दोनों के पास हाइड्रोजन। इसके पास एक CH3 ऊपर बना दिया, और इसके पास ये CH2 CH2। तो देखो ये सिस बन गया ना, एक साइड को रोटेट करोगे तो वो ट्रांस हो जाएगा, एंड दैट हैपेंस ओनली विद Y, सो C शुड बी द करेक्ट आंसर। गिव्स अ कंपाउंड पेल येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन। इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज है उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए? CH3। तो पेंट 1 ऑल तो निकल गया, कैसे? पेंट, ये पेंट है, ये 1 ऑल है। द कार्बन दैट हैज OH, इट डज नॉट हैव एनी CH3, तो निकल गया। पेंट 2 ऑल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन बनाए मैंने, और सेकंड कार्बन पे OH लगा दिया, और उसी कार्बन के पास CH3 भी है, करेक्ट। गिव्स पेल येलो, तो मेरा ख्याल यही होगा ना। पेंट 3 ऑल, OH इधर आ जाएगा सेंटर में। तो देखो द कार्बन विद OH, इट डज नॉट हैव एनी CH3, तो ऑफ कोर्स ये भी नहीं होगा। अगर आप ड्रॉ करोगे इट शुड बी B। सर CH3 होना क्यों जरूरी है? Because it should react with alkaline aqueous iodine. Something that react with iodoform to give yellow PPT must have this structure. Make sense? Yeah. That is the minimum condition for a molecule to give yellow PPT with iodine. Okay, try this one, everyone. बच्चों को टाइम दिया, मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा। Done. The mechanism for the reaction between ethanol and HCN was shown. Step down. What is the correct structure of intermediate ion, and what is the next step in this mechanism? अच्छा, इंटरमीडिएट में ये होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
और ये CN इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर ये नेगेटिव चार्ज इसके पास लोन पेयर भी हैं, ये हाइड्रोजन को खा जाएगा। ये याद है हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ। बी वाला ठीक लग रहा है मुझे। व्हाट इज द डिफरेंस, ये सी वाला भी निकल गया ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन बी एंड डी? बी एंड डी सर कार्बन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं कहाँ है? अच्छा हाँ, यस, तो इसका मतलब बी शुड बी करेक्ट बिकॉज देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड। या ये वाला स्ट्रक्चर दोनों में सेम, दैट इज करेक्ट। So which compound will react with 2,4-dinitrophenylhydrazine but does not react with toluenes? देखो 2,4 के साथ करेगा जिसमें कार्बोनाइल होगा, could be aldehyde और कीटोन, और टॉलेंस के साथ अगर नहीं करेगा तो इट्स कंफर्म अ कीटोन, कीटोन होना चाहिए। ये तो कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये एल्डिहाइड है, ये करेगा, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी करेगा, इसमें कार्बोनाइल ही नहीं है, ये नहीं करेगा, तो इट शुड बी ए, इट्स अ कीटोन, does react with 2,4 but does not with toluenes. Compound X has a stereoisomers and forms a precipitate when bound with Fehling region. तो stereoisomers है मतलब या तो उसमें chiral carbon है या उसमें cis trans है, डबल बॉन्ड वाले टू डिफरेंट है। So chiral carbon A में है chiral carbon, this is not chiral, not chiral, not chiral, not chiral. इसमें तो ना कोई chiral है और ना ये cis trans देगा। ये cis trans क्यों नहीं देगा by the way? Why this A will not show any cis trans isomerism? I mean, there is a double bond. Because there But- are two methyl groups attached to the same carbon. Yes, there are two methyl group, which is not fit. इसमें कोई chiral नहीं है, but इसमें stereoisomers देगा because two carbons have double bond and they have different attachments. देखो कैसे, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक अटैचमेंट ये, एक अटैचमेंट हाइड्रोजन, इसकी एक अटैचमेंट ये, एक अटैचमेंट हाइड्रोजन. सो इट does gives geometrical, and do you think it will form precipitate with phalanx? Is it aldehyde? No, it is a ketone. तो कीटोन तो phalanx के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये भी इनकरेक्ट. अच्छा ये भी कीटोन है, ये भी नहीं देगा, तो यही बचता है. दिस इज एन एल्डिहाइड, phalanx के साथ precipitate बनाएगा, किस कलर के बनाएगा? And it has a chiral center. Can you see a chiral center? All four sides are different, एक हाइड्रोजन है. It does react with phalanx, also have a chiral center. For 37, it should be the last option. Which reaction will form a propanoic acid? So propanoic acid, देखो ये एस्टर है, तो ये जो O8 वाली साइड होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड देती है, और आयल वाली साइड प्रोड्यूसेस एल्कोहल, तो it would form ethanoic acid, not propanoic acid. Yes, I think this has propanoate, so this can form propanoic acid, alkaline hydrolysis. अच्छा ये देगा. इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि लेट्स इमेजिन हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे कर रहे हैं? तो आपको मिलेगा एथेनॉल CH3CH2OH and you will get propanoic acid CH3CH2 and COOH. अच्छा इस propanoic acid की सिंस आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एल्कलाइन के साथ, तो वो जो भी एल्कली होगी that can react with acid to form salt, तो propanoic acid तो बचेगा नहीं, you will end up having CH3CH2 COONA. तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसका ख्याल रखना है आपको. एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में जो एसिड होता है फाइनल एसिड, वो उस मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है, एसिड तो बचता ही नहीं. एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपेनाइट्राइल, ये मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि प्रोपेनाइट्राइल है, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा ना. ये तो शावेज और साथ आप सबको याद होना चाहिए जितनी बार हमने ये किया थ्योरी पेपर्स में. एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एथेनाइट्राइल would produce ethanoic acid. Lactide is an intermediate manufactured in synthetic fiber which compound on heating with acid catalyst can produce lactide. so ये बड़ा मजे की चीज है, मैंने कुछ दिन पहले बच्चों को करवाया. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है और इसमें दो एस्टर्स हैं. which compound on heating with acid? अच्छा
अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो एक साइड ये है और बिल्कुल आइडेंटिकल साइड ये है। ऐसा है या नहीं है ना? ऐसा ही है। ओके, अब आपको पता है कि ये जो कार्बोनाइल होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है और ये OH से आता है, और ये बॉन्ड इट डजंट एग्जिस्ट। आप इमेजिन करें कि ये चीज है, तो मैं एक अलग बना लेता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ। ये वाला मैं यहां से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 कार्बन है, 2 3 कार्बन, और सेकंड कार्बन के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है, दिस कार्बन। अच्छा, फर्स्ट कार्बन इज कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट कार्बन इज, ये बात सबको समझ आई मैंने कैसे स्ट्रक्चर से ये बना लिया। और दूसरे वाला भी वही है। यस, अब इसको नाम दें, क्या है ये? इट्स 2 मिथाइल, आई मीन नहीं, अच्छा उसने इसको ब्रांच किया हुआ है ना, तो अगर हम 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 1 2 3 4 कार्बन, नो, अच्छा ये तो कार्बन ही Sir, नहीं है। alcohol group second ये carbon पे यस 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 यस, पार्ट पार्ट, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन के साथ OH अटैच है, तो इसी के साथ अटैच है। यस, वो तो कार्बन ही नहीं था। ओके, अब हम इसको सही से ढूंढ लेते हैं। इट शुड बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, राइट? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड रेफर्स टू C। तो बस इसमें स्ट्रक्चर आपने सही से जूम इन करके उसको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन, diagram shows some relative abundance of the different isotope of lead in a sample of lead ore. Abundance of 208 is half of 206. Abundance of 208 is equal to 209. ठीक है, इनकी अगर 25 है तो इसकी 50 है, तो क्वेश्चन में दी हुई। सो व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? इसको कैसे करेंगे यार? इसका मास 206 टाइम्स 50 प्लस 208 टाइम्स 25 plus 209 times 25 over 100. Please do the maths, everyone. You get the answer. That is the last thing from the Sir, today's class. B. B. You said B, right? So I assume आप सबको जहां जहां difficulty थी, since most of you were there throughout the class, and paper 1 is a big chance to save your entire grade in this subject. It's a big final chance, so I want everyone to put maximum effort in coming days, solve as many questions as you want, as you can. 36 प्लस अगर आपने स्कोर, 36 का मतलब हम बड़े कंफर्ट जोन में हैं कि आपके जो पिछले पेपर में 2-3 मार्क्स कटे हैं किसी भी रीजंस में, वेदर इट इज प्रैक्टिकल और वेदर इट इज योर थ्योरी पेपर, उसको यहाँ पूरा कर सकते हैं विद एफर्ट ऑफ 2-3-4 days. एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑफ कोर्स कभी रिपीट नहीं होते, बट यस आइडियाज यही हैं, यही इसी तरह की क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं।